Hi everyone, welcome to you all in my another video. And today video is about AMC exam Australia. So if you are a medical doctor and want to migrate to Australia, what are the options you have? There are two options. First, that you need to write the AMC exam and migrate to Australia. Another program, basically, is a specialist pathway, as you know. Or another program, basically, there is no need to write any exam. If you just take your MBBS degree, still you can migrate to Australia without writing any exam. So what are the opportunities for medical doctors in Australia? So Australia, I can say, is one of the best destination, especially in the next 2 to 3 years, because here the government change and they are giving the visa is very short time. Like within 3 days, 4 days, 5 days, you can get a permanent residency in Australia once you complete this process. Okay, so and the Australia basically offer every year 195,000 permanent visa for the immigrants they can migrate to Australia. So the healthcare professional, as you know, again in academically, we provide courses for dentists, pharmacists, nurses, physiotherapists. So what would a student passing from our academy getting the visa within 3 days, 4 days? If you watch my previous video, they always say that it may take around 3 to 6 months to get your visa. But अभी जो हो रहा है कि 3-4 दिन में भी आपको वीज़ा मिल जा रहा है, ये बहुत ही कॉमन है. इट्स नॉट लाइक मैं बताऊँ अपन हमारे 20 से 25 स्टूडेंट को हमारे पिछले 2 वीक में इतना वीज़ा मिला है. तो वीज़ा बहुत ही फास्ट चल रहा है. अगर हम यही कंपेयर करते हैं, समवन डिड ए इंजीनियरिंग डिग्री इवन फ्रॉम IIT, तो उसको भी 1 से 1.5 साल लगा रहा है वीज़ा मिलने में. बट इफ़ यू आर फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू आर गेटिंग विद अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है. एंड फॉर डॉक्टर्स अराउंड 10,000 वैकेंसीज अवेलेबल. द AMA ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके अनुमान है कि नेक्स्ट 2 to 3 years में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में. और सैलरी इज वेरी हाई, अप टू $4,000 कैन अर्न एज ए जस्ट ए GP. ठीक है. तो ये तो थी बात की अपॉर्चुनिटी केवल हमारी एजुकेशन फ्री होती है और आपके जो पार्टनर कैन वर्क फुल टाइम, एंड हेल्थ केयर इज फ्री इन ऑस्ट्रेलिया. Quality of life and like your personal development, if you want to do some specialization or want to do some certificate, most likely the hospital will pay your fees. And yes, higher earning potential. Number one step that you need to write that AMC exam. So if you go for AMC exam pathway, so the first basically you need to go for a called document verification. Okay, and then you have to write AMC exam, and then you have to write English exam, then EMC2, and then you can get it for registration and you can work as a registrar or an agent in Australia. तो जो पहला स्टेप उसमें वेरिफिकेशन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स. तो बहुत ही सिंपल है. 2 होते हैं. तो प्रोफाइल बनाना पड़ता है अपना ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर. वहाँ वेरिफिकेशन करनी पड़ती है अपनी डिग्री. वही बहुत ही ईजी एकेडमिकली पे हम अपनी हेल्प करते हैं उसके अंदर. ठीक है. और जैसे होता है ये AMC का बहुत ही ईजी एग्जाम है. वही कहूँगा around, if we compare this NEET PG in India, so NEET PG is very tough exam compared to AMC. क्योंकि यहाँ पर जो पासिंग रेट है अराउंड 60 to 70% स्टूडेंट पास करते हैं पार्ट 1 के लिए. ठीक है. और अगर आप यही आप इंडिया में लगाओ कितने लोग को जो है क्लिनिकल सीट मिल पाती है इंडिया के अंदर. और दूसरा इंग्लिश की जो कोचिंग होती है उसकी भी हम लोग कोचिंग है. तो हम आपको बेसिकली पार्ट 1 जो डॉक्यूमेंट आप करवा देंगे. और AMC के एग्जाम के 4 मंथ के आपको कोचिंग कराते हैं ऑस्ट्रेलिया से. हमारे जो 2 लेक्चर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो खुद ही बेसिकली इंडिया से आए. यहाँ MBBS MD इंडिया से किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और फिर यहाँ पर उन्हें AMC पास किया. अभी वो जो है जो हम जॉब कर रहे हैं वही हमारे लेक्चर से डॉक्टर तो उधारा हुआ है. दैन जो है श्रीलंका से, तो वो भी उनका सेम सिमिलर बैकग्राउंड. तो है ना, ये हम पूरा एग्जाम पास करेंगे. फिर आप इंग्लिश से पास करेंगे. जो ये पार्ट 1, इफ यू पास द एग्जाम and then an English test, then you are eligible to work as a junior medical officer. And then you can simultaneously you can prepare for yourself for part 2, and once you pass that part 2, and you can become a basically residency even though in Australia. So ये तो थी step basically. But if you want to go into the specialist pathway, उसमें क्या होता है कि basically if you have to did your master degree, MD or MS from your home country, and you have at least
8 to 10 year working experience in your field, and your CV is very extraordinary, right? Not just the working. You did some special courses, you have some research, publish some articles, lot of things need to go in that pathway, okay? You can try for it if you are in that, but that practically के एक्सपीरियंस हो, अगर आपका बहुत एक्सट्राऑर्डिनरी सीवी है तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं. बट थियोरेटिकली कोई भी जिसने पीजी किया हुआ है वो उसको ट्राई कर सकता है, बट मोस्ट लाइकली किसी को भी मिलता नहीं. आई डोंट नो इन माई लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ यहाँ पर्सनली, कि किसी को भी जिसने 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने एमडी किया या एमएस किया और उसको ये मिल गया हो, ठीक है. और नंबर 3 जो पाथ में होता है वो बेसिकली आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने लिए एज ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर. सो इफ यू कंप्लीटेड योर MBBS MD on MS and now you are working as a administrator, मतलब if you are doing like a managerial thing in the hospital or you're on nursing home or you are working somewhere, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो like a medical manager, healthcare manager or जो है medical administrator, in that case there is no need to write any exam. You can apply basically 491 visa. So some of the states already open for this. This is basically like New South Wales, Northern Territory, South Australia and Western Australia. अभी 4 स्टेट में ये ऑफरिंग है. You can apply for 491 regional sponsored visa, and simultaneously Academically can help you to pass the exam. और बेसिकली कि आपने Academically को ज्वाइन किया, आपने जो AMC की प्रिपरेशन चालू कर दिया, साथ में आपको ये अप्लाई करा देंगे हम. तो आपने AMC क्लियर करने के बाद जब आप इस पर आते हो, जरूरी नहीं है you need to work as a medical administrator. If you can clear the exam, this AMC1 and AMC2, and that become a doctor in Australia. But what I do, ask me that, sir, I don't want to go in the clinical practice. I don't want to work. I just want to come to Australia and I want to just start in Australia and कोई भी नॉन क्लिनिकल अगर जॉब मिल जाएगी तो मैं वेकॉल्ड होगा. पर मेरा सजेशन ये कि आपने MBBS किया है तो यू मस्ट गिव इट ट्राई आप टू बिकमिंग डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया. घबराने पर इतना बात नहीं है. आप सोचिए कि IAS के लिए कितने इवन मेडिकल डॉक्टर्स भी यहाँ बैठते हैं, राइट? IITian बैठते हैं, जनरल लोग तो बैठते हैं. और वहाँ तो कितने % प्रोबेबिलिटी होती है कि जो है वो बंदा जो है IAS ऑफिसर बन जाएगा. शायद लेस देन मतलब 0.5% से भी कम की उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है. फिर भी लाखों लोग इंडिया में एग्जाम पर बैठते हैं. AMC में क्या है कि 70% लोग पास कर रहे हैं पार्ट 1 को, पार्ट 2 को भी अराउंड 25% लोग पास कर लेते हैं फर्स्ट टाइम में. तो आपको और क्या चाहिए? And if you are in Australia, if you can clear first time, you can go for second time. तो यहाँ पर बहुत ही ईजीली है कि आप अपने जॉब करते रहिए, साथ में आपको लेते रहिए और डेफिनेटली यू विल रीच ऑन द बैक डेस्टिनेशन. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस and on this number, our team will correct you. And if you have the video, I'm watching this video.